everyone. This is Coach Neha. I'm coach at Gun for Glory Shooting Academy. So we have been talking about lot of things around during this lockdown time, and we already our coaches since last week we are trying to help all the shooters across with different queries what they had, that what has to be done during lockdown period. So first we had Nishant Natwani from GFG Jabalpur and Yuniat Ilyas from Gun for Glory Pune. They spoke about a lot of different technical types of training, strip training, wall holding and balance training. Which was relating to what you can work on during your lockdown period, what weaknesses you can work upon, what strength you can work upon, technicalities. So we have been trying to reach out all of you and help you all in some way as possible. Also we spoke a lot about routine, how the routine has to be, how the sleep has to be, how the technical practice has to be, how to utilize space. There were different topics which we discussed, and a couple of days back we had our mind trainer Kritika Pandey and coach Nishant, and they spoke about different exercises during the lockdown period. We spoke about breathing exercises which will help you, which you can develop, and which can help you when the lockdown is over. You can really make use of these small exercises and develop your skills. So also right now we will be going online with Aradhana Sharma. Which is the most important topic right now, since which you will be able to follow this nutrition or diet, what we call. It's a very important topic, and I'll just Aradhana ma'am will join us in a while. We're just waiting for due to Aradhana ma'am to join us. Give us a couple of minutes. You are enjoying your lockdown, and you are properly planning your proper day. Hello everyone.
We are trying to connect Aradhana ma'am. Just give us a couple of minutes. Yes. Hello, Aradhana ma'am. Hi Neha, good evening. Good evening. Can you hear us? Yes, I can hear you. Yeah, because your video is a bit. Your video is getting stuck, Neha. Yes, your video is getting stuck. No, my side it's okay. I see your video getting stuck. Let me just see. Am I? Yes, we can hear you. Everyone, please give me a thumbs up if you can hear me. Give us a minute, but I would like you to introduce Aradhana ma'am. Hello, good evening, ma'am. Good evening, Neha. Now it's clear. I can see you. Yeah, we can hear you, but then your video is not clear. Let me do one thing. Let me send a request to join. Then you can accept that. Okay. Let me just try that. All right. Yes. Minute. Till then, I would like to introduce her. Yes, ma'am. Did you add me, Neha? Yes, I have. Oh, there seems to be some issue. I don't know because I'm able to see my video and your video too. I guess there is some network issue. There's some network issue. That is why we are not able to have both the videos at the same time. Let me connect to another device. Just give me 1 second. Yes, ma'am. So, Aradhana ma'am is a leading sports nutritionist with 21 years of experience in the field of nutrition and fitness. She has trained more than 1,000 athletes, national and international medalists in various sports. She is also senior consultant with many organizations and corporate sports organizations like Indian Army, MP government, OGQ, and Manipal University. So, ma'am,
So we will be discussing. Discussing on various queries, as well as we will be discussing on diet during the lockdown. Just give us a minute for the video to get clear. Yes, ma'am. Can you hear us? Yes, Neha, I can hear you. Can you please send me the request so I can join the video? Yes, I've already done that. Also, in this, also you can give us a reply on how did you like our mental training session and technical training which was done by us, and you can reply us, give us your feedback on that. We are trying to reconnect again. Just give us a couple of minutes. Hello, can you hear me? Hello, Neha? ma'am. Hi, Yes, ma'am. Yes, finally, ma'am. finally. Hi, finally. Thank you so much. Sorry, guys, for the delay. We had some network issues, but definitely we are starting it right away. Aradhna, ma'am, we would all like to know, and there have been a lot of queries regarding a lot of diet issues right now during the lockdown. And please give us your thoughts on that. Okay, so first of all, let me apologize for this. I don't know what was happening there. I could see you, hear you, but you were not able to see me. So I'm sorry it's for this about 10 minutes delay. Big hi to everyone out there, whoever has joined us. Want to thank you all. About the lockdown, the first thing I want to tell you is you all have to chill out first, okay? Because your diet is not the only thing that is concerned there, but your stress factor also, because diet is very, very much related to how stressed or how relaxed you are. Now, I'll not ask you how you all are doing during lockdown, because we all are trying our best to be there and utilize our time in best possible manner. Now, many of you already must have read a lot on social media or
over the news, or you must have learnt a lot about what to do, what not to do. And first thing that pops up is build your immunity. So many of you would know by now how to do that. So I would not go very much in detail because half of you will leave the call right away. We all know that. So just those who didn't get a chance to hear that out, or who didn't read about it. So first thing is to build your immunity. With diet, you need to have still a balanced diet. So during lockdown, I'm also getting many questions that I need to give up this and that. So no, you have to eat from all your food groups. You have to eat your cereals, you have to eat your fruits and vegetables and dairy, and from the oils and fat part. The only requirement there would be is you cut down the portion size. I'll come to that later. But there are few challenges that are already there when I talk about build your immunity. I'll tell you to increase your vitamin C, the first thing. But the question pops up that many of them don't have availability of fresh fruits and vegetables and all that. So I'll request till the time you have fresh fruits and vegetable available, try to get your hands on that. Just clean them properly and start consuming. If that is not the case, the easiest option is get the vitamin C supplements, because that is really, really important right now. Now, if everyone is talking about oranges or lemons, but if oranges and lemons are not available, so let me tell you, even if you're taking guava is a very good source of vitamin C. In fact, most of the fruits do contain vitamin C, but then there are few which have it more than other fruits. So guava is a very good source. Another good source, of course, we don't eat it in our daily diet, is the green chili. I mean, that's the surprising source. Vegetable, but good amount of vitamin C. So those who are used to having green chilies with their food, it's good. Please continue that. One thing that I was having a session another day, and a question popped up that we are preparing lots of fresh lime juice, storing it in the fridge and consuming it throughout the day. Please do not do that. Vitamin C does not stay, so its potency gets reduced. It does not stay good for a long time. If you are consuming your lemons, just squeeze it fresh in water and drink it. That's the way to go. So to get most amount of vitamin C available there in the fresh lemon or lime, whatever you're using. So the main thing is cut your fruit fresh and consume it as soon as you can. That's the first thing. You're getting lots of vitamin C through that. If you're not getting fresh fruits and vegetables, then please start taking vitamin C tablets, because that is important. Another thing is hydration. Your body requires it. So please do not cut down your water intake, even for athletes and non-athletes. It goes for both. But see, if an athlete was drinking, say, about 4 liters of water during the training period, but now there is no training or just minimum hours of training, so they are just going down to 1.5 to 2 liters. Please don't do that, because your muscles are still there what you had when you were training, and your muscles do need water. All your physiological activities, water is required even for metabolism. So please do yourself a favor, bring up your water level again, your water intake again, to, if you can't drink 4 liters, of course, because you're not sweating out so much, then you can come down to 3 liters. But from 4 coming down to 1.5 liter is injustice to your body. So please don't do that. All right? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, I would like to speak whatever ma'am has said. I would like to reiterate in Hindi for some of you. So मैम इज सेइंग, मैम बता रहे हैं कि राइट नाउ अभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू हैव विटामिन सी इन योर डाइट. सो वो बोल रहे हैं कि कंज्यूम फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, एंड ट्राई टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी बाय हैविंग विटामिन सी. ऑल्सो वो बोल रहे हैं कि ऑरेंजेस प्रॉब्ली आर नॉट अवेलेबल. अगर नहीं है तो there is also guava, which is also one of the important fruit to increase vitamin C. Green chilies उन्होंने कहा है कि काफी important है, जिससे विटामिन सी आपको मिल सकता है. तो आपके अगर फूड में आप अगर यूज कर रहे हो, इट इज काफी अच्छी बात है. अगर आप फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हो सकते हैं
तो विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स है वो आप यूज कर सकते हैं और आपको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है टू आपका इम्यूनिटी अच्छा होने के लिए। ऑल्सो वो कह रहे हैं कि एज एन एथलीट आपके नॉर्मल रूटीन में अगर आप 4 लीटर पानी पी रहे हैं, लेकिन अभी आप अगर एक्टिविटीज कम हो चुकी है आपकी घर में, तो आप उसको कट डाउन करके 1.5 लीटर पी रहे या 2 लीटर पी रहे, वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो आप पानी कंज्यूम कीजिए प्रॉपरली, सो आप हाइड्रेटेड रहे। मैम प्लीज। Okay, so coming back to when we talk about the fresh vitamins that is available in most of the fruits. Neha, you want me to go in Hindi and English both? I can do that. Yes ma'am, yes ma'am, that would be great. So जो vitamins आपको fresh fruits में मिलता है, vegetables में मिलता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारे के सारे उसके अंदर आपको फ्रेश विटामिन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास खट्टा फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो दूसरा फ्रूट में, केवल ये होता है कि उसकी मात्रा कम या ज्यादा होती है। अलग अलग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा कम या ज्यादा होती है। तो प्लीज वो कंटिन्यू रखिए। अभी कई लोगों के अंदर डर ये हो रहा है कि हम कुछ लोगों ने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नॉनवेज ये सब खरीदना ही बंद कर दिया है। सो आई विल अगेन वांट टू एम्फसाइज दैट जो कोरोना वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है। अभी तक ऐसे केसेस नहीं है कि फूड से, वेजिटेबल से एंड आपका फ्रूट से ये स्प्रेड हो रहा है या मिल्क से और किसी चीज से। तो प्लीज जब तक आपके पास ये सारे खाने की चीजें अवेलेबल है, डू नॉट गिव अप ऑन दैट। Please buy. Only thing is you need to maintain hygiene. Clean the packets properly. Clean your vegetables and fruits properly. उनको अच्छे से धो के, सुखा के तब फ्रिज में स्टोर करके रखिए ताकि आप उसको कंज्यूम कर पाए फ्रेश। ओनली थिंग इज कि जब तक अवेलेबल है आप प्लीज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। अनदर थिंग, वी डोंट नो लॉकडाउन कब तक कंटिन्यू रहेगा एंड कब तक आपके पास सप्लाई बनी रहेगी, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो हॉटस्पॉट या रेड जोन में जो आ रहे हैं कोविड के कारण, वहां पे कंप्लीट सीलिंग हो रहा है। वहां अपना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। उस केस में अगर आपको एसेंशियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपका डेली का सामान, तब आपको सिंपली आपको एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। यूजुअली मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती एथलीट्स के लिए या जनरल पॉपुलेशन के लिए भी। अगर आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स लेने की। लेकिन इन सच कंडीशंस व्हेन थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ नेचुरल फूड, देन आपकी ड्यूटी है कि आप मेक श्योर करें आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली मिल रहे हैं। तो उस केस में यू नीड टू स्विच टू अ मल्टीविटामिन एंड अ मल्टी मिनरल सप्लीमेंट। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी तक मैंने बातें बोली, मे बी आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉकडाउन में डाइट का क्या करें। काफी लोग हो रहे हैं जो क्रैश डाइट पे जा रहे हैं, एक मील नहीं खा रहे कि वेट ना बढ़ जाए एंड ऑल दैट। वन वेरी सिंपल थिंग यू नीड टू डू इज आपके सारे मील्स कंटिन्यू रखिए। ओनली थिंग, पोर्शन को कंट्रोल करना है। जो मात्रा है आपके खाने की, एक टाइम के खाने में आप कितनी खा रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू ऑल कैन डू। सो आपकी जैसे ट्रेनिंग पहले 4 घंटा या 5 घंटा हो रही थी और अब आपकी ट्रेनिंग 1-1.5 घंटा, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस सब घर पे कर रहे हैं या टेक्निकल रीडिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिटनेस सारे लोग कर रहे होंगे एथलीट्स। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खाना एकदम कट डाउन ना करें, ग्रेजुअली उसको थोड़ा जो क्वांटिटी है, वी कॉल इट पोर्शन कंट्रोल, कि आपके खाने का एक पोर्शन जो होता है उसको कंट्रोल करना है। सो आई गॉट समथिंग टू शो यू, अ वेरी सिंपल एग्जांपल। दिस इज द रेगुलर टी कप, everyone can see that, right? Give me thumbs up, those who are able to see it. So this is a simple tea cup that we are supposed to drink our tea in home. ये हमारा इंडियन टी कप साइज का है। इसमें करीब 120 से 150 ml डिपेंडिंग आपका किस शेप का कप है, 120-150 ml आता है। ये रेगुलर इंडियन यूज वाला टी कप है। बट होता क्या है, these days we are using this for a tea and coffee. So that is the problem. When I tell you for portion control, हमको gradually यहाँ से यहाँ आना है। You all can see the difference. This is the simplest thing you have to do.
प्लीज डोंट कट डाउन ऑन एनी मील, लाइक डोंट स्किप एनी मील्स. आई मीन कट डाउन ऑफ कोर्स थोड़ा हमको करना है, लेकिन स्किप नहीं करना है कि आप ये सोचे कि आज मैं लंच छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो कैलोरीज कम जाएगा. हमको कैलोरीज वहां से कम नहीं करना, हमको यहाँ से यहाँ आना है. नेहा, दैट्स विजिबल, क्लियर टू यू? यस मैम. नाउ अगेन पोर्शन कंट्रोल. ये अगर 120 ml का है या 150, ये जो इट्स यूजुअली मिल्क मग, लेकिन हम लोग ज्यादातर इसके अंदर कॉफी पी रहे हैं आजकल, बोर हो रहे हैं, तो इसका साइज है 350 ml. तो आप डिसाइड करो कि दिस वर्सेस दिस, क्योंकि आपका एक्टिविटी पहले इतना हो रहा था, अभी इतना है, तो इसलिए आपको अपना जो फूड का कंट्रोल है, जो फूड का पोर्शन है, उसको आपको कंट्रोल करके थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा. तो मान लीजिए अगर आप 5 चपातीस खा रहे थे जब फुल ट्रेनिंग कर रहे थे एक टाइम में, जस्ट एग्जाम्पल. So now you have to gradually cut down. Abhi you can't come from 5 to 3 right away. Like if I'm eating 5 chapatis today, tomorrow I can't go to 3 because I'll be very, very hungry. So 5 ko you need to cut down 4.5, next day 4, so that your stomach gradually shifts. कि आपका जो पेट है उसका कैपेसिटी धीरे धीरे शिफ्ट होगा. अगर एकदम से कट डाउन किया तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी एंड आप यू विल एंड अप ईटिंग जंक फूड. फिर जो सामने आता है, जब बहुत भूख लगती है, जो सामने आता है वो खाना चालू कर देते हैं. ठीक है, तो पोर्शन कंट्रोल इज वन थिंग. द सेम गोज विथ एवरीथिंग एक्सेप्ट मिल्क, बिकॉज मिल्क इज रिक्वायर्ड. तो वो आपको उसका क्वांटिटी रखना है, बिकॉज बोन्स, मसल एंड लॉट्स ऑफ थिंग. मिल्क इज ऑलमोस्ट अ फुल कंप्लीट मील. उसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एवरीथिंग इज देयर. तो मिल्क आप कट डाउन मत करिए. ओनली थिंग, अगर फुल फैट मिल्क ले रहे हैं तो थोड़ा सा लो फैट पे शिफ्ट हो जाइए. देन अदर थिंग्स, आपका सीरियल जो ग्रेन्स होता है, दलिया हो गया, म्यूसली हो गया, चपाती, आटा, फ्लोर, ये सारी चीजें हैं, राइस है, आपको कंटिन्यू रखनी है डाइट में. केवल अमाउंट कम करना, उसका क्वांटिटी आपको थोड़ी सी कम करनी है. सो दैट्स बेसिकली. एंड अगेन प्रोटीन वाला चीज है. फ्यू पीपल हैव स्टॉप्ड ईटिंग एग्स एंड नॉन वेज. प्लीज डोंट डू दैट, because the time you go back to your training, it is going to be really, really difficult, because in one fine day you can't start again eating everything and start training, so you'll face trouble. So consider this as off season. ऑफ सीजन में थोड़ा हम कट डाउन करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बंद नहीं कर देते कोई भी चीज खाना. देन few other things were there that athletes are supposed to eat 5 to 6 times a day. So if you are telling that we are just now shifting to 3 meals a day, please don't do that. Cut down the quantity in your major meals. जो आपका big meals है उसमें से quantity cut down करिए, लेकिन आपको 5 meals continue करना है. Now meal means not everything. So आपका meal one very good snacking option in this time, because the heat is going high now. So what you have to do is start taking buttermilk. छाछ जो होता है वो लेना स्टार्ट करिए, बिकॉज वो आपके जो गट बैक्टीरिया उसके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी, जो गट हम बोलते हैं उसके लिए इट्स वेरी वेरी हेल्दी. तो अगर आप छाछ के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं तो छाछ कैन बी योर वन स्नैक, फ्रेश फ्रूट कैन बी योर अनदर स्नैक. सो ये सारे आपके क्या है, लो फैट ऑप्शंस हैं. लॉकडाउन के टाइम में अगर आपको कुछ चीज कम करनी है तो जो डायरेक्ट फैट इनटेक आपका था वो आपको कम करना है. यू डोंट हैव टू स्टॉप टेकिंग एनी मेजर फूड ग्रुप फ्रॉम योर डाइट. आप दाल कंटिन्यू रखें. फैट जैसे कि तला हुआ नहीं लेना है. जो आपके सारे जंक फूड्स आते हैं मोस्टली हाई इन फैट, सो दैट गोज विदाउट सेइंग. वो आप सबको पता है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी कि हमको जंक फूड नहीं खाना है. तो दैट इज अप ऑन योर विल पावर. All those things depend on your mental stress also. So the easiest thing कि जंक क्यों नहीं, कैसे खाना बंद करें. The easiest thing is we don't buy those. Can you see that? Neha, is it visible? No, it comes opposite. Yeah, it's like a mirror. Yes. So how to stop eating junk? This is the answer. You stop buying it. Don't buy them. आप खरीदोगे नहीं, घर में होगा नहीं, आप खाओगे नहीं. ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ. फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ऑप्शन. फ्रेश फ्रूट नहीं है देन ड्राई फ्रूट्स. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स. नट्स इज बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, वो सारी चीजें, ऑल दोज थिंग्स आर ड्राई नट्स. ड्राई फ्रूट्स आर फिग्स, दैट इज अंजीर, डेट्स,
खजूर एंड रेजिन्स, किशमिश जो होता है या मुनक्का, ये सारी चीजें जो है ड्राई फ्रूट्स है। तो अगर फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, आप ड्राई फ्रूट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। दैट कैन बी योर गुड स्नैक। आप अगर ड्राई नट्स पहले ले रहे थे, बादाम, अखरोट, वो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि उस दो इट इज रियली गुड फॉर हेल्थ, इट कंटेन्स गुड हेल्थ, बट राइट नाउ हमारा मेन एम है कैलोरीज को कट डाउन करना, क्योंकि हम उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम में। सो प्लीज जस्ट कट डाउन ऑन फैट कंटेनिंग फूड। फ्रेश फूड अभी भी आप जितना खा सकते खाइए। Only thing, please clean your vegetables and fruits properly. That is really important. With your diet is your rest. बिकॉज आपका अगर स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है हर दूसरे तीसरे दिन, कि आज हम नेटफ्लिक्स लगा के बैठ गए और मैराथन मूवीज देख रहे हैं 4 घंटे 5-6 घंटे, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। तो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड। अगर आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए तो रेस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड स्लीप साइकिल जो आपका फिजियोलॉजिकल साइकिल है, आपका जो बॉडी क्लॉक है, उसको प्लीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। प्लीज रिकॉर्ड योर स्पेशल प्रोग्राम्स, यू कैन वॉच देम लेटर। क्या है कि अगर लॉकडाउन खुलता है एंड मान लो मैं आपको बोलती हूँ आपको परसों से ट्रेनिंग पे जाना है, यू जस्ट हैव टू गो टू ट्रेनिंग जस्ट डे आफ्टर टुमारो, देन व्हाट हैपेंस? Your body is not going to support, because you are now used to stay awake till 1 and 2 a.m. And for training, you have to wake up at 5 a.m. So you will not be that energetic. You will not be that fresh. So what all will set in, first thing is early fatigue. आपको थकान जल्दी होगी, वो सबसे पहले आपका सेट इन होगा। उसके बाद में देर आर चांसेस कि आपका फोकस एंड कोऑर्डिनेशन, आपका जो स्पोर्ट है, यू नो हाउ, मेरे से ज्यादा आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेशन, फोकस and coordination, so that all gets affected. So your sleep and your rest is really important. Neha, should we go to take the questions now? Do you have Yes, enough ma'am. questions? Yes, first let's just reiterate, because a lot of messages have been coming on because we are speaking in Hindi, English. So just 4-5 points what you mentioned, we'll speak, and then we can go ahead with the question. Sure. So number one, what ma'am has told is regarding improving your immunity और विटामिन सी का कंजम्पशन। दूसरी बात है स्टे हाइड्रेटेड। पानी आप अगर 4 लीटर ले रहे थे पहले, don't just reduce it to half of it, try to consume. It's also because abhi it's summer out there and there's lot of heat, so you need to consume lot of fluids. Third thing is try to consume natural food, vegetables, and अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि that the virus is not spread through vegetables or anything, so please don't think in that manner and not consume food, vegetables. Fourth, otherwise you will have to take multivitamin tablets. Fifth thing, it's a very important part which you need to understand is about what ma'am spoke about portion eating. आपको portion में ही खाना है, बहुत ज़्यादा अभी मैं घर पे हूँ तो बहुत ज़्यादा खाना है ऐसा नहीं है। You try to reduce your portion. Keep your meals, if you're having 5 times a meal, but your portion, try to restrict your portion. And that way this will be able, you will be able to manage your diet properly. And same thing what we have been trying to tell you in technique as well as technical training, mind training, that just don't stop everything. आपका routine वैसे का वैसे रखना, so that when the lockdown is over, you will be able to come back to the routine in an easy way. It won't be hard on you. So next, ma'am, we have questions regarding a couple of. Just 1 second Yes, before ma'am. we go to question. There had been lots of talk about including antioxidants also, and of course they all Okay. must have read about it. But just one point I want to add there कि antioxidant के लिए I mean green tea is one option, but those who don't are not used to drinking green tea and all that, see simply जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप फ्रेश खाइए, तो फ्रेश में कैसा आपका विटामिन मिनरल्स यू आर गेटिंग, बट इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो। कि आप जितना कलरफुल आपका प्लेट होगा, कि आपने गाजर डाला है उसके अंदर, ब्रोकली, इफ ब्रोकली इज नॉट अवेलेबल, एनी काइंड ऑफ ग्रीन देयर, देन येलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देयर, तो जितना कलर
उसमें अपना प्लेट के अंदर डालेंगे उतना एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेंट आपके डाइट का बढ़ेगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आपके जिस भी रोज रोज डोंट स्टे with just potatoes and peas and stuff like that. Of course those are required, but हर दिन एक ही एक सब्जी और वो आप जितना variety add कर सकते हो अपने खाने के अंदर, of course. And then if you can add green tea also, that is really good because antioxidants of course will help you to improve your immunity. There are a couple of common questions which we have been getting for quite some time. The first question would be, I would like you to give your thoughts on what is good breakfast for shooters. Okay, so good breakfast for shooters and otherwise also in general is you include some kind of cereal, grain. So it can be either a multigrain bread. The best thing available हमारा Indian diet में जो है that is dalia. Okay, you can have dalia, you can have any multigrain bread और muesli is also available. लेकिन उसके अंदर sugar content काफी होता है. So just take small amount अगर आप muesli खा रहे हैं या फिर oats. So these are few options to include grains in your breakfast, any kind of grain. Along with that has to go some dairy product. मैं आपको एक complete ideal breakfast बता रही हूँ. You can pick and choose whatever is available at your place. Then dairy product, it can be milk directly or it can be curd. कुछ लोग कर्ड खाना पसंद करते हैं अपना मॉर्निंग में, स्पेशली बिकॉज नाउ इट्स द वेदर इज हॉट. उसके साथ में अगर कर्ड भी नहीं तो बटर मिल्क, एक ग्लास बटर मिल्क आप ले सकते हैं. देन प्लीज इंक्लूड 1 फ्रेश फ्रूट. रिमेंबर आप 3 से 4 फ्रूट एक दिन के अंदर आपको खाना है अगर अवेलेबल है तो उसमें से एक फ्रूट आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि फ्रूट एक तो गुड कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है आपके डाइट में, प्लस इट प्रोवाइड्स यू एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो. तो एक फ्रूट होता है आपके ब्रेकफास्ट के, आइडियल ब्रेकफास्ट होगा एक फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट कोई भी एक, उसके साथ में सीरियल ग्रेन्स कोई सा भी एक, एंड प्रोटीन वाला कोई चीज. अभी प्रोटीन कुछ अमाउंट आपको दूध और दही से मिल सकता है, बट अगर एग्स अवेलेबल है तो प्लीज एग्स आप स्टार्ट करिए. पनीर से ज्यादा बेटर ऑप्शन है टोफू का, बिकॉज टोफू इज लो इन फैट. बट इफ टोफू इज नॉट अवेलेबल एंड यू डोंट हैव वेट इश्यूज देन प्लीज पनीर. तो कुछ प्रोटीन वाला सोर्स भी आपके डाइट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में होना चाहिए. अगर वो सब अवेलेबल है देन यू कैन, अगर आपके पास वेजिटेरियन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है देन आप अपना जो दलिया बना रहे हैं या फिर ओट्स ले रहे हैं उसके अंदर में ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें, टू ऐड द प्रोटीन कंटेंट इन दैट. And how much time before we have to take it before our training? So नेहा that will depend कि अभी जनरली आई एम नॉट रियली अवेयर कौन किस टाइम पे ट्रेनिंग कर रहा है. तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताया, अगर ये कंटेंट ले रहे देन ये ट्रेनिंग के करीब 2 घंटा पहले होना चाहिए. Okay. अगर आपका ट्रेनिंग में आप लेट उठ रहे हो, ट्रेनिंग के लिए उतना टाइम नहीं है, देन यू हैव टू कट डाउन. जैसे ओट्स है वो उतना जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी नहीं देगा. ओट्स थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होता है क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है. या डायरेक्टली मिल्क आप ट्रेनिंग के पहले मत लो, क्योंकि कुछ लोगों को उससे स्टमक अपसेट होता है. तो उस केस में आप फ्रूट्स एंड कुछ प्रोटीन वाला पार्ट, क्योंकि फ्रूट्स का जो कार्बोहाइड्रेट है दैट गेट्स डाइजेस्टेड वेरी फास्ट, तो फ्रूट लिया एंड कुछ प्रोटीन वाला पार्ट लिया, सो दैट विल बी गुड. लेकिन अदरवाइज आप मान के चलिए 90 to 120 मिनट्स का गैप आपको चाहिए ब्रेकफास्ट के बाद में बिफोर यू स्टार्ट ट्रेनिंग. Okay. Also, a lot of questions regarding which food is best before the match. Also, as a coach, I would like to ask you, because एक तो चीजें ऐसी है कि some of them have matches at 9 o'clock, some of them have it at 11, some of them have afternoon. So this question, just कि क्या खाना चाहिए before match, will vary definitely depending upon the timings, right? Yeah, so that will vary. if अगर आपको पता है कि आपका match it's going to take place in the afternoon, then you have to eat a proper breakfast in the morning, like whatever you are eating regularly, then you have to have proper breakfast and one small meal. Not because if it's in the afternoon you can't have your lunch and go there, so then a small snack can be there. It can be a fruit before your match, okay, or it can be some dry fruits along with, if you are okay, eating some almonds and all that. Again, I want you to go with little caution. Almonds, when I say, it does not mean 15-20 बादाम या अखरोट खा लिया, because it has lots of fat, so it takes time to digest.
So when I'm saying that fruits and nuts, then dry fruits have to be more and nuts have to be less. But the best option at any given time is the fruits before match, because fruits का क्या है, जो energy है, that is quick release, and it helps you to because your brain works on glucose. You need energy for your brain also to stay alert. So you need something that will be digested in a decent amount of time and will provide you energy. Now if you see, many times it happens that match was supposed to start at 11 but it doesn't start it till 12:30. होता है ना वैसे. So in that case, always carry something easy to eat with you, some kind of snack. If nothing else is available, a multigrain biscuit, or I have even let my athletes eat a Marie biscuit, because eating is important. Don't go to your competition empty stomach. Please don't do that. So of course, biscuit is not the best choice, but if nothing else is available, then you try it. The best choice to carry along with you is fruit all the time. You should have it because it comes handy. An orange or a banana, which doesn't need lots of cutting and all, you can just peel and you don't need to chop it. So those are the best options. But please, because in India especially it happens, things don't start on time. I'm sorry, that happens a lot. So 11 का अगर 12:30 बजता है, then you should have. Generally what happens when you're traveling or going for competitions, nutrition is the last thing on your mind. But please don't do that. Plan your nutrition also along with your tournament and your training, because that is the fuel for your body. Your body will run only on your food. So please don't let nutrition go on the back seat. Carry it along with you wherever you go. So next question we have is which fruit is best for eyes? Colorful. So more than fruit, so anything that is yellow and orange is going to be good for eyes. Now when we talk about yellow fruit, the first thing comes is the king, that is mango. All right, so mango is really good for your eyes because anything that is green and orange will have carotenoids. Okay, so you need vitamin A for your good eyesight. So to more than fruits, I will tell you to shift towards the vegetables where you get excellent carrots. Carrots can be good snacking items too. So carrots and pumpkins and stuff like that are good for your eyes. Again, yellow and orange stuff. Even reds have some amount of keratin in it, but still we prefer. So anything that is yellow, so mango is again a good source, but it doesn't mean that other fruits will not contain that. For eyesight, one very, very important thing is limit your screen time. Diet alone is not going to help. आप पूरा विटामिन ए अपने डाइट के थ्रू ले लोगे, आप सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आपके लेंटिल्स एंड एवरीथिंग यू विल इंक्लूड, लेकिन उसके बाद में अगर आपको आईज को स्ट्रेन कर रहे हो आप अपने फोन पे या लैपटॉप पे बहुत ज्यादा टाइम तक, तो उतना न्यूट्रिशन काम नहीं आएगा. सो यू हैव टू kind of keep your eyes away from so much of stress, because those blue rays are not really good. वो आपका concentration killer है blue rays. So a couple of food that some of them had asked in the questions is, one is about brown bread and peanut butter, and one is Saffola oats. Okay, so we'll start with the brown bread. Unfortunately, most of the breads in India, that at least the brands I have seen, brown bread may, if you read the label, caramel is added for color. So it may not be really the brown bread. अगर आपको ऐसा बेकरी या फिर ऐसा सुपरमार्केट पता है जहाँ पे दे हैव देयर ओन बेकिंग फैसिलिटीज एंड यू आर श्योर कि वो ब्राउन ब्रेड आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ बेक करके दे रहे हैं, देन एनी गिवन डे ब्राउन ब्रेड इज बेटर ऑप्शन देन व्हाइट ब्रेड. बट जो लोकली जो अवेलेबल होता है उसमें आपका जो ब्राउन ब्रेड है उसमें जनरली कैरेमल कलर लिखा होता है. आप पहले उसका एक बार लेबल रीड करो एंड अगर उसमें वो सब लिखा हुआ है देन प्लीज डोंट बाय इट, देन व्हाइट ब्रेड ही खा लो. फॉर ब्राउन ब्रेड यू विल स्पेंड मोर मनी बट विल गेट ओनली व्हाइट ब्रेड विद ब्राउन कलर. सो ब्राउन ब्रेड एनी गिवन डे बेटर ऑप्शन देन व्हाइट ब्रेड, बट इट हैज टू बी अ प्रॉपर ब्राउन ब्रेड. ऑलराइट, एंड पीनट बटर. So yes, peanut butter is a good option. I mean, it's better than regular butter and jam because peanut butter provides you good fats.
in it. It provides you protein, it provides you carbohydrate also. Whereas if you take regular jam and butter, jam के अंदर there is no protein, but peanut butter के अंदर protein है. So if you want to substitute your butter and jam with peanut butter, then yes, it's perfectly all right. But again, precaution there. I mean, you need to take that, do not eat too much of peanut butter because fat content is again high in peanut butter. So it's not like in one go you are taking 2-3 tablespoons of peanut butter. You take enough that you can spread on your bread and start having it. So in one go about 10 grams, that is 2 teaspoons of peanut butter will be good. But it's not like tablespoon, like you go 3 tablespoons and that becomes 45 grams of peanut butter. So please don't do that. But otherwise, it's a good thing to eat. Then what was the next one, Neha? Saffola oats. Okay, so Saffola oats in today's time, right, during lockout and all, are the easiest one to prepare. So please eat that because oats is anyways better option than regular cornflakes, because cornflakes का जो हम glycemic index बोलते हैं, the line got processed होता है. तो if we and processed आपका जो Saffola oats है वो भी है, but अगर आपको choose करना है दो चीजों में से कि आपको कॉर्नफ्लेक्स लेना है या ओट्स लेना, देन प्लीज गो विद द ओट्स. एंड जो प्लेन ओट्स है उसको जरूरी नहीं है आप मीठा बनाओ, दूध एंड शक्कर एंड हनी वो सब डाल के यू कैन प्रिपेयर इट सेवरी ऑल्सो. आप ओट्स को पानी में जब बॉईल कर रहे हो उसके साथ में कुछ स्पाइसेस डाल दो एंड फ्यू वेजिटेबल्स यू कैन ऐड. दैट इज द बेस्ट वे टू ईट. Also, ma'am, there is one query that shooters बहुत सारे shooters, I've seen lot of shooters after training, what they do, usually when they finish their evening sessions, and evening most of the time they have to go for their heavy workout sessions. So what they do is they finish their training say around 5, for example 5 o'clock or 5:30, and they don't eat anything and immediately they go for their heavy workout session. So can you please suggest a couple of things what they can eat Yes. in between? Yes. So in that case, Neha, not only that duration, but it also becomes important कि वो जब training के लिए आए थे, what did they eat before that? Because that food has to provide them energy for a longer time. Okay, so they need to have a proper meal before they go for their exercise. I'm sorry, for their technical training. Now after technical training, when they go for their gym training, that's what we're talking about, right? Fitness training. So Yes, उसमें generally there is about 30 minutes gap. Okay, and when they go to gym training, there is about 15-20 minutes they do the warm up and then they start the regular training. So this is according to my calculation working with shooters, how I know their schedule is. So when I take that after technical training to getting exactly on the workout in the gym, it goes about 45 minutes because then their warm up and all that also takes time. In that case, right when their training ends, their technical training ends, they can take a bread with peanut butter. Bread slice with peanut butter. That can be a good option because that will provide them some carbohydrate and protein for their workout. If that is not possible, because few travel right from their training center to the gym. So in that session, again, then either dry fruits or fresh fruits along with few dry nuts is the best option available. Some like to take some supplements also. So please, Yes, guys, yes. this is not the time to continue on supplements. Please pay more attention on your regular diet. Make this time as a building good habits time, okay? Because this is the time you're not working out too much, so you can use all your brains for your food. So if you are taking only thing is you will need multivitamins if fresh foods is not available, in your place. And then vitamin C supplement you can take. One caution there, again, you may need to start vitamin D because during lockdown we are staying indoors a lot. So vitamin D3 your body may get deficient in vitamin D3. So please start taking that. Those who are giving up on non-veg with the fear that it will spread corona, first of all, it will not spread. But if you're not taking that and you're not drinking enough milk and all that, please start with B12 also. Okay, because these 3 things are important. You don't want your body to be lacking something by the time you go back to your trainings. So vitamin C, D3 and B12, these things are important right now.
All right, ma'am. Thank you so much for your valuable suggestions, and please, shooters, try to understand what you have to eat during. So it's more about the portion. So for those of you who have been doing their baking sessions and baking a lot of cakes and posting it, small portion is important, not the huge cake what you have been baking. So do bake, but then for you all it is a little small portion because you guys are athletes and you right now this is a lockdown period. It's an off season. Don't take it as a vacation. So so be it technical training, be it mental training, or be it nutrition. Right now is a period where you can gather yourself and really control it and get into new good habits which you were not being able to practice. Thank you so much, Aradhana I ma'am, still for see joining few us. questions popping up. Lots of questions are popping up. Okay. We can, Okay. if we Okay. find time later, we can connect again sometime because lots and lots of questions I see popping. I'm so sorry, can't take those right now, but we may connect some other time later. And I wish you all the best. Please stay cool, stay calm, control your portions, drink lots of water, build your immunity, and let's fight Corona. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. And Thank you so much, Neha. yes. So shooters, you can find this on our YouTube, and you can watch all the videos, the previous videos as well. Thank you so much. Take care. Stay safe. Bye, ma'am. Thank you. Bye.